कहाँ पड़ा आपका ये? Okay, next is question number 21. पढ़े बच्चे? जी सर. Force is a vector quantity and mass is a scalar quantity. State how a vector quantity differs from a scalar quantity. Vector has direction, scalar doesn't have direction. बस जब उन्होंने कहा ना स्टेट हाउ वेक्टर इज डिफर फ्रॉम स्केलर, तो आपने कहना है वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन. जस्ट वेक्टर क्वांटिटी हैज direction. Vector quantity has direction. Next, state one other vector quantity and one other scalar quantity other than mass and weight. जी, क्या लिखे हम इसमें? velocity लिख दें. velocity, थोड़ी सी और भी लिख लेते हैं. acceleration, momentum, moment, displacement, they are all vector. स्केलर में आ जाए तो mass को नहीं लिखना हमने, mass के अलावा time, temperature, distance, speed, energy, power, pressure, etc. ठीक है? They are all scalar. An aeroplane flies through the air in a straight line with its engine at full power. The weight of the aeroplane is kilonewton. The weight is acting downward. So the weight is given. There is also a force of 320 kilonewton acting upward. So upward force is 320 kilonewton on aeroplane at 30 degree, theta equals 30 degree. Next is in space below, use a graphical method. अपने draw करना है to determine the size and the direction of the resultant of these two forces. Use a scale of, अच्छा उन्होंने स्केल भी बता दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 40 किलो न्यूटन. तो 1 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 21. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 40 किलो न्यूटन. तो स्केल नहीं मिलेगा. अच्छा जी, और 160 किसके इक्वल हो जाएगा? 160 किलो न्यूटन इक्वल्स 4 सेंटीमीटर है ना. एंड 320 किलो न्यूटन बिकम 320 डिवाइड बाय 40 कर दें. 320 डिवाइडेड बाय 40 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. ओके. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन इज मूविंग. देयर इज ऑल्सो अ 3 ऑन एरोप्लेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. तो पहले तो एक हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं. ये आपने स्केल से खुद ड्रॉ करनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन मीन एक्स एक्सिस. इधर से आपने 30 डिग्री का एंगल मेजर करना है, और मेजर करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर. You have to draw the line of 8 centimeter at an angle of 30 degree with the horizontal. Any confusion? No, sir. And then
you have to draw a 4 centimeter line in a downward direction. This one is 4 centimeter line. So the resultant will be, for the resultant we have to use head to tail rule. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Let's suppose we have to join the tail of 4 centimeter with the head of 8 centimeter. Let's 4 centimeter line. ठीक है, head to tail rule होता है ना. So I move 4 centimeter and join the its tail with the head of 8 centimeter line. So this will be your resultant vector. This is the resultant. Okay. ठीक है. और अब आपने रिजल्टेंट की वैल्यू तो खुद निकालनी होगी. स्केल डायग्राम से है, ये चेक करना. द आंसर शुड बी इन द रेंज ऑफ 3.9 टू 4.1 सेंटीमीटर की रेंज में होना चाहिए. ठीक है. और ठीक है. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. सर जी बच्चा, डायरेक्शन में क्या बताएंगे? वही मैं देख रहा हूँ. यानी नॉर्थ का या एंगल? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. 21 है ना क्वेश्चन? जी, तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा यूज कर लें. थीटा इक्वल्स, इन्होंने क्या किया हुआ मार्किंग स्कीम में, tan इनवर्स सर या 21 का कौन सा पार्ट है? बी पार्ट, या प्रोटेक्टर से तो नहीं मेजर किया हुआ. हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस 3 डिग्रीज. हॉरिजॉन्टल. प्लस माइनस 3 डिग्रीज लिखा है इन्होंने. अच्छा, बस आपको फिर ये स्केल से मेजर करना होगा कि ये जो एंगल है ना, दिस इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 3 डिग्री होगा. कोई वैल्यू क्या दी हुई है? बस ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस 3 डिग्री. जी सर. कोई 3 डिग्री तक बनेगा. अगर इसके अलावा कोई और हम यूज़ करें, हाँ, इसको आपको स्केल से ही मेजर करना पड़ेगा. तो द रेंज इज +-3 डिग्री from horizontal. Next is state the energy changes. Sorry, an aeroplane is traveling in a straight line at constant height. Height is constant. The aeroplane accelerates. State the energy change that is taking place as the aeroplane accelerate. As the aeroplane accelerates. तो इसमें हम लिखेंगे जी, which energy change is taking place here. जी अब्दुल्ला. सर पहले बैटरी का है ना? एरोप्लेन है, तो तो हम लिखते हैं केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल. केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल. Chemical energy from fuel is converted into kinetic energy, is converted into kinetic energy, energy and thermal energy, and thermal energy. Next is, as the aeroplane accelerates, the pilot keeps the engine at constant power. Power उसने constant. constant कर दी है. So the aeroplane eventually reaches a constant speed. So speed becomes constant. अब कहते हैं explain why the aeroplane stops accelerating and reaching a constant speed. It So needs air resistance ends up becoming equal to to the force इससे with exerted by terminal the plus
हाँ, इसमें aeroplane is not falling downward, it is moving forward, so I it can say means in a way the similar ही होंगे ना. yes. तो हम लिखते हैं when the aeroplane accelerates, when aeroplane accelerates, when the aeroplane accelerates, then air resistance air resistance also increases with increase increase in the speed, with increase of speed, ठीक है, but in opposite direction. Increase sentence देखिए सही है. When aeroplane accelerates, then air resistance also increases with increase With of increases. speed, Uh, but in opposite direction, but in opposite direction. And eventually, इसके बाद हम लिखते हैं when forward force become equal to the air resistance, equal to the air resistance, then resultant force becomes zero, then resultant force become zero, and it reaches a constant velocity or speed. Next is when traveling at constant speed, the pilot directs the aeroplane into a tight turn that follows a circular path. Explain why the aeroplane is accelerating even though the speed is not changing. जी, मतलब जो एरोप्लेन है ना, वो टर्न ले रहा है, सर्कुलर टर्न ऐसे ले इसमें रहा वही बताएंगे क्योंकि डायरेक्शन keeps on changing due to the centripetal force, and since acceleration depends on velocity, not speed, the changes there. है, इस तरह कांस्टेंट सर्कुलर टर्न ले रहा है ना. तो इसमें हम कहेंगे although the speed is constant but at each point the direction of velocity is changing, है ना. वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी. हम लिखते हैं when aeroplane move in circular path, तो हम लिखते हैं in circular path the direction of velocity is changing, the direction of velocity is changing at each point, at each point, Each point. although the speed is constant, although the speed is constant, although the speed It's constant. Yeah. is constant. Okay. This इसके change in बाद लिखते direction. हैं due to this change in direction, due to this change in direction in
direction, aeroplane acceleration is reduced. हाँ जी सर. Acceleration is reduced. Okay. The The next constant, is what is meant by uniform acceleration. Uniform acceleration it's a produces constant change in when there is a change velocity. in velocity. And if the velocity, good. तो हम कहेंगे if there is equal change in velocity in equal interval of time, the equal change in velocity, the equal change in velocity, the equal change in velocity in equal interval of time, the equal change in velocity in equal interval of time produces produces uniform acceleration. No sir. Uniform No sir. acceleration. Any confusion? A कहते vector हैं has acceleration is direction. vector quantity. State how a vector quantity differs from scalar quantity. हाँ जी, vector quantity has direction. Vector quantity has direction. A rock from a space station is traveling in a straight line at high speed. When it enters the Earth's atmosphere, the speed time graph of the rock at time t equals 0 to time t equals 50 seconds. The speed time graph is given. On figure 9.1, a letter, mark a letter x where the rock is moving with a constant speed. Where the rock is moving with a constant speed, Sir, give the law. show me. So here we have to mark x. A letter y where the rock has uniform deceleration. Uniform deceleration. Where the graph is almost a straight line here. है ना? Where the graph is almost a straight line, so it's a dune. Let's see where the rock has Non-uniform. non-uniform deceleration. Non-uniform कहाँ पे होगा? And deceleration. So this is here. ठीक है? Next is at time t equals 25 seconds, the mass of the rock is 8.4 kg. For the time t 25, determine the size of the acceleration of the rock. Size of the So acceleration x equal of time. rock at 25 seconds. No? Oh no. At time 25 second. Where is the 25 second? This one. Here you have. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट लेते हैं. ऑल्दो द लाइन इज स्ट्रेट हियर, है ना, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक तो लाइन से, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ. तो सो द लाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. तो हम यहाँ पे यूज करते हैं y2 minus y1 x2 minus x1. तो y2 is almost क्या बन जाएगा, हाँ जी. So y2. 42 44,000. So y2 is, जी. yes, y2 is 44,000, 4400 minus y1 is initially is 8,000, 29. and then x2
here x2 is almost 23? 29 and x1 is Yes. So minus 600. 1 2 3 23. check करें आंसर minus 600. आंसर देखिए इसका क्या है. 500. 600. आंसर आया है 600. ये तो डिफरेंस है 100 का. ये क्या करें. तो फिर आपको ना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी एट 25 पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. Tangent. यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन और वो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ. फिर कलर चेंज कर रहा हूँ. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऑलमोस्ट ओह लाइन दी 25. आप स्केल से जब ड्रॉ करें ना तो आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. नहीं सही लगी है अभी तक. जी. बस समझ रहे हैं ये लाइन है. ठीक है. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. और अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो हम लेंगे इसको. नीचे वाले को हम ले लेते हैं. इट्स 24 28 यहाँ पे इट्स अराउंड 30 200 और 3200 माइनस और कितना आ रहा है 8800 divided by here x2 is 30 and x1 is now So 20. minus अब चेक करें. 466. So वो स्ट्रेट लाइन होता तो आंसर ठीक ही आ जाता. अब सही है. So हाँ जी 466 that is deceleration है ना. So this is 500. So the answer is अब f is equal to m लगाएंगे. 500 meter per second square. Size of the resultant force F equals ma. So F is unknown, mass 4200. A. F equals m. 200. Mass is 8.4. Acceleration is 500. So 200. 4200 Newton is the force. Instance figure 9.2 shows the rock at equals 25 seconds. The direction of travel, the rock, the surface of Earth. On figure 9.2, draw and label two arrows to show the direction of gravitational force and the air resistance acting on the rock. Give us direction of gravitational force. So gravitation force towards the वो जो नीचे वाला Earth. हाँ तो यही होगा ना. जी. This one is the direction और of दूसरा वाला होगा opposite to the motion. gravitational force. Opposite to this is the direction of air resistance, but you have to represent it with r. So the size of air resistance changes as a rock travels through the earth atmosphere. सर जी. इसका इनका ये ज़्यादा एयर होता है तो So हाँ तो हम लिखते हैं the resistive force increases the
air resistance, the air resistance increases, the air resistance increases as the speed of rock increases. Speed of rock increases. Okay, so just what happens to the rock at t equals 40 So second? it crashes into 40 the earth, it सेकंड hits पे the क्या ground or होगा? surface. Where is 40 सेकंड? हाँ, 40 सेकंड पे तो वो हिट कर जाए. हाँ, हाँ, it जी strikes the ground. जी सर. It strikes ground. काफी है.